हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। Varun Beverage Limited with a target price of rupees 1050. The current market price of Varun Beverage Limited is rupees 900. Varun Beverage Limited, incorporated in the year 1995, is a large cap company having a market capital of rupees 39,187.33 crore, operating in FMCG sector. एक FMCG कंपनी है ये वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। Financials for the quarter ended 30/9/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 2,477.37 crore, down -1.20% from last quarter. Total income of rupees 2,507.45 crore and up 37.17% from last year same quarter. Total income of rupees 1,806.11 crore. Company reported net profit after tax of rupees 257.90 crore in latest quarters. Promoters FII Holdings. Promoters had 64.89% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs own 21.72%, DIIs 6.78%. ओके, सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। Varun Beverage Limited with a target price of rupees 1050. The current market price of Varun Beverage Limited is rupees 900. Okay, next stock. Okay, सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है दालमिया भारत लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है दालमिया भारत। दालमिया भारत with a target price of rupees 2,520. The current market price of Dalmia Bharat Limited is rupees 1,889. Dalmia Bharat Limited, incorporated in the year 2013, is a mid-cap company having a market capital of rupees 35,356.79 crore, operating in cement sector. एक cement company है ये दालमिया भारत। Financials for the quarter ended 30/9/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 2,622 crore, up 27% from last quarter. Total income of rupees 2,615 crore and up 6.98% from last year same quarter. Total income of rupees 2,451 crore. Company reported net profit after tax of rupees 209 crore in latest quarters. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 55.97% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs own 15.07%, DIIs 4.71%. ओके, सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है दालमिया भारत लिमिटेड with a target price of rupees 2,520. The current market price of Dalmia Bharat Limited is rupees 1,889. Okay, next stock. Okay,
सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है फेडरल बैंक लिमिटेड। Federal Bank Limited with a target price of rupees 125. The current market price of Federal Bank Limited is rupees 89. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। फेडरल बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1931 is a banking company having a market capital of rupees 18,787.53 crore, operating in banking sector. Financials. For the quarter ended 30/9/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 4,013.46 crore, down -3.24% from last quarter. Total income of rupees 4,147.77 crore and down -2.85% from last year. Same quarter, total income of rupees 4,131.32 crore. The company reported net profit after tax of rupees 499.42 crore in latest quarters. Okay. Promoters FII Holdings. Promoters held 0% stake in the company as of 30 September 2021, while FIIs own 25.92%, DIIs 42.54%. Okay. सो गाइज एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है फेडरल बैंक लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है with a target price of rupees 125. The current market price of Federal Bank Limited is rupees 89, having a market capital of rupees 18,787.53 crore. Okay, next stock, operating in banking segment. Okay, so guys next stock है भारती एयरटेल लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है भारती एयरटेल लिमिटेड। इट्स मोर भारती एयरटेल लिमिटेड with a target price of rupees 820. The current market price of Bharti Airtel Limited is rupees 721. Bharti Airtel Limited, incorporated in the year 1995, is a large cap company having a market capital of rupees 4,27,054.16 crore, operating in telecommunication sector. Telecommunication company is Bharti Airtel Limited, operating in telecommunication sector, having a market capital of rupees 4,27,054.16 crore. Financials. For the quarter ended 30/9/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 28,435.20 crore, up 5.07% from last quarter. Total income of rupees 27,063.40 crore and up 9.64% from last year. Same quarter, total income of rupees 25,933.90 crore. Company reported net profit after tax of rupees 1,399.30 crore in latest quarters. Okay. Promoters FII Holdings. Promoters held 55.86% stake in the company as of 6 November 2021, while FIIs own 25.33%, DIIs 13.69%. Okay. सो गाइज एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है भारती एयरटेल लिमिटेड with a target price of rupees 820. The current market price of Bharti Airtel Limited is rupees 721, operating in telecommunication sector, having a market capital of rupees 4,27,054.16 crore. Okay, so guys
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, बोलो राधे राधे।